सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
दिन तेरे लेकर तेरा नाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम, चरण पढ़ूं मैं निस दिन तेरे लेकर तेरा नाम। चरण पढ़ूं मैं निस दिन तेरे लेकर तेरा नाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम। मेरा जैसे मुझको बना दे ओ मेरे सावरिया। मेरा जैसे मुझको बना दे ओ मेरे सावरिया। अंतर मन की प्यास जगा दे छलके प्रेम गगरिया। ये बनवारी ओ गिरधारी हे राधा की शाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम, चरण पढ़ूं मैं निस दिन तेरे लेकर तेरा नाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम। नाम अनेकों जग में तेरे, माधव मोहन नागर। नाम अनेकों जग में तेरे, माधव मोहन नागर। कर हो जाऊं शरण में तेरी, नाम की महिमा गाकर। तुमसे गोकुल तुमसे मथुरा है वृंदावन धाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम, चरण पढ़ूं मैं निश दिन तेरे लेकर तेरा नाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम। मोहनी सूरत सांवरी मूरत लगती है अति प्यारी। मोहनी सूरत सांवरी मूरत लगती है अति प्यारी। कृपा करो तुम मुझ पर कान्हा, मैं हूँ शरण तिहारी। तेरे दरस को तरसे नैना पल पल मेरे शाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम, चरण पढ़ूं मैं निस दिन तेरे लेकर तेरा नाम। कन्हैया तेरे चरणों में सुबह हो शाम। बोल मेरी नंदलाला, अब कौन मेरा रखवाला। बोल मेरे नंदलाला, अब कौन मेरा रखवाला। बोल मेरे नंदलाला, ओ गिरधर पाला। बोल मेरे नंदलाला,
गिरधारी, कोई न मेरी धीर बंधाए, गोवर्धन गिरधारी। संकट में डाला ओ गिरधर गोपाला, बोल मेरी नंदलाला, अब कौन मेरा रखवाला। लहर लहर मझधार बनी है, करूं मैं कौन उपाय। लहर लहर मझधार बनी है, करूं मैं कौन उपाय। तारनहार बचाई बूढ़ी, नैया डूबी जाए। बीच भंवर तू डाला ओ गिरधर गोपाला, बोल मेरी नंदलाला, अब कौन मेरा रखवाला। सुनापन है रात अंधेरी, जो कहाँ से लाऊं। सुनापन है रात अंधेरी, जो कहाँ से लाऊं। मुरली वाले तू ही बता दे, ऐसे में कित जाऊं। मुरली वाले तू ही बता दे, ऐसे में कित जाऊं। कर दे दिलाला ओ गिरधर गोपाला, बोल मेरे नंदलाला, अब कौन मेरा रखवाला। बोल मेरे नंदलाला ओ गिरधर गोपाला, बोल मेरे नंदलाला, अब कौन मेरा रखवाला। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। दैवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि न मन से सोच के, न वाणी से बोल के, और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगें। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा न सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई न करें। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दें। ये सारे लक्षण दैवी संपदा से युक्त लोगों के ही हो सकते हैं। Divine Son of Vasudeva, slayer of the tyrant Kamsa, Devaki's supreme joy, I salute thee, Krishna, Lord of the universe. Vasudeva Sutam Devam Kausachanur Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum.
Centuries ago, there existed a fabled kingdom, a splendid domain, unrivaled by any other in the land. A kingdom ruled by the Kuru dynasty, favored by the gods. Two brothers there were, Pandu and Dhritarashtra. Pandu, blessed with 5 sons, the Pandavas, wise, strong, brave, intelligent. Dhritarashtra, sire of 100 male offspring, the Kauravas, in whom the seeds of pride, envy, greed, and lust germinated and blossomed into evil. Pandu died, and Dhritarashtra, devious in his ways, having robbed his brother's heirs of their rightful inheritance, ruled supreme, surrounded by wicked intrigue. Krishna, God incarnate, came to try and avert the evil spawned by the Kauravas, but it spread its tentacles, culminating in a fratricidal war the like of which had never been experienced. On the battlefield of Kurukshetra, Arjuna, personifying the human mind and emotions, succumbs to grief and uncertainty. Krishna coaxes him out of his depression, explaining what lies before him and how he should face and overcome it. The word Arjuna means one who makes sincere effort, and the word Krishna stands for the center of consciousness. Krishna's explanation and Arjuna's acceptance of it are the essence of a sustaining philosophy. Arjuna's struggle is that of every human being, his sorrow and hesitation known to each of us. In each day, at each moment of our lives, we encounter new challenges, unknown goals beckon, and the verses of this celestial song teach us how to meet them. The spirit of man seeks, uncertain of what it will discover. None of us is perfect. It is the striving towards perfection that enriches our lives. For far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though marred by failure, than to take rank with those feeble spirits who neither enjoy nor offer much, because they exist in the grey twilight that knows neither victory nor defeat. Shrimad Bhagavad Gita. Dhritarashtra, king of the Kurus, sits on his throne, his mind filled with the terror of impending doom. A dry, hot wind blows through the abandoned walls of his palace, echoing despondently in the silent emptiness. His aloneness intensified by a suffocating desire to be present at the scene where all are, cursed in his sightlessness, he speaks. Gathered on the field of righteousness, massed in battle array on the land of the Kurus are my people, and the sons of Pandu. What do they there, O Sanjaya? Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samaveta
Sanjaya speaks. The prince, Duryodhana, seeing the Pandavas grouped in fighting rank, addresses his teacher. See, O master, the sons of Pandu, organized by your wise pupil, the son of Drupada. Our army, led by Bhishma, is vast and mighty. Theirs, guarded by Bhima, is but limited. Eldest of the 100 strong brothers, the leader of the Kuru royal stands, arrogance in his bearing, his challenge implicit. Sanjaya uvacha drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharya Raja Vachanamagrahita Pashetam Panduputranam Acharya Mahatim Chamu Vyudham Drupada On the opposite side of the field, a chariot drawn by white horses is brought to a standstill in the midst of the Pandava forces, at the command of its occupant, the young warrior Arjuna, pride of the Pandavas. Arjuna vacha senayoru bhayor madhye Ratham sthapaya me achyuta. Arjuna views the scene before him. He looks beyond the dividing lines soon to be crossed. Facing him are his grandfather, venerable founder of a heroic dynasty, its bloodline corrupted now by greed and envy. His cousins, his friends. A soldier, he has until now fought impersonal wars. Until this moment, he has been diverted by preparation, by the frenzy of mounting war lust, forgetting in the rush for battle whom he is to fight against. As realization dawns, as he sees the familiar, loved faces confronting him, he is steeped in sorrow. The young, fresh-complexioned face turns ashen. Impulsively, he turns to his charioteer.
Oh Krishna, I see before me my own people, my own kinsmen waiting to do battle with me. I tremble with horror, mouth dry. I desire neither victory nor kingdom nor happiness. O Govinda, of what use is happiness or life if destruction be the price? Drishtveman svajanam Krishna yuyutsum samupasthitam sidanti mama gatrani mukham cha parishushati vepathoscha sharire me romaharsha cha jayate na kangshe vijayam Krishna na cha rajyam sukhani cha kim no rajena Govinda kim bhogar jeevitena va na kangshe vijayam Krishna na cha rajyam sukhani cha kim no rajena Govinda kim bhogar jeevitena va kim bhogar jeevitena va kim bhogar jeevitena va. Cowardice overcomes me, grips me in the sentimental throes of pity. I am confused, my reason clouded by emotion. In your wisdom, speak, tell me what I should do. कार्पाण्यदोषो पाहत स्वभाव कार्पाण्यदोषो पाहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता कार्पाण्यदोषो पाहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. Divine Son of Vasudeva, slayer of the tyrant Kamsa, Devaki's supreme joy, I salute thee, Krishna,
Lord of the universe. Vasudeva Sutam Devam Kausachanur Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Centuries ago, there existed a fabled kingdom, a splendid domain, unrivaled by any other in the land, a kingdom ruled by the Kuru dynasty, favored by the gods. 2 brothers there were, Pandu and Dhritarashtra. Pandu, blessed with 5 sons, the Pandavas, wise, strong, brave, intelligent. Dhritarashtra, sire of 100 male offspring, the Kauravas, in whom the seeds of pride, envy, greed, and lust germinated and blossomed into evil. Pandu died, and Dhritarashtra, devious in his ways, having robbed his brother's heirs of their rightful inheritance, ruled supreme, surrounded by wicked intrigue. Krishna, God incarnate, came to try and avert the evil spawned by the Kauravas, but it spread its tentacles, culminating in a fratricidal war the like of which had never been experienced. On the battlefield of Kurukshetra, Arjuna, personifying the human mind and emotions, succumbs to grief and uncertainty. Krishna coaxes him out of his depression, explaining what lies before him and how he should face and overcome it. The word Arjuna means one who makes sincere effort, and the word Krishna stands for the center of consciousness. Krishna's explanation and Arjuna's acceptance of it are the essence of a sustaining philosophy. Arjuna's struggle is that of every human being, his sorrow and hesitation known to each of us. In each day, at each moment of our lives, we encounter new challenges, unknown goals beckon, and the verses of this celestial song teach us how to meet them. The spirit of man seeks, uncertain of what it will discover. None of us is perfect. It is the striving towards perfection that enriches our lives. For far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though marred by failure, than to take rank with those feeble spirits who neither enjoy nor offer much, because they exist in the grey twilight that knows neither victory nor defeat. Srimad Bhagavad Gita. Dhritarashtra, king of the Kurus, sits on his throne, his mind filled with the terror of impending doom. A dry, hot wind blows through the abandoned walls of his palace,
echoing despondently in the silent emptiness. His aloneness intensified by a suffocating desire to be present at the scene where all are. Cursed in his sightlessness, he speaks. Gathered on the field of righteousness, massed in battle array on the land of the Kurus are my people and the sons of Pandu. What do they there, O Sanjaya? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत Sanjaya speaks. The prince, Duryodhana, seeing the Pandavas grouped in fighting rank, addresses his teacher. See, O master, the sons of Pandu, organized by your wise pupil, the son of Drupada. Our army, led by Bhishma, is vast and mighty. Theirs, guarded by Bhima, is but limited. Eldest of the 100 strong brothers, the leader of the Kuru royal stands, arrogance in his bearing, his challenge implicit. Sanjaya uvacha drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharya Raja Vachanamabrahita Pashetam Panduputranam Acharya Mahatinchamu Vyudham Drupada On the opposite side of the field, a chariot drawn by white horses is brought to a standstill in the midst of the Pandava forces. At the command of its occupant, the young warrior Arjuna, pride of the Pandavas.
Arjuna Uvacha Senayoru Bhayoramadhye Ratham Sthapayame Achyuta. Arjuna views the scene before him. He looks beyond the dividing lines soon to be crossed. Facing him are his grandfather, venerable founder of a heroic dynasty, its bloodline corrupted now by greed and envy. His cousins, his friends. A soldier, he has until now fought impersonal wars. Until this moment, he has been diverted by preparation, by the frenzy of mounting war lust, forgetting in the rush for battle whom he is to fight against. As realization dawns, as he sees the familiar, loved faces confronting him, he is steeped in sorrow. The young, fresh-complexioned face turns ashen. Impulsively, he turns to his charioteer. "O Krishna, I see before me my own people, my own kinsmen waiting to do battle with me. I tremble with horror, mouth dry. I desire neither victory nor kingdom nor happiness. O Govinda, of what use is happiness or life if destruction be the price?" Drishtvaimam svajanam Krishna yuyutsum samupasthitam sidanti mama gatrani mukham cha parishushati Cowardice overcomes me, grips me in the sentimental throes of pity. I am confused, my reason clouded by emotion. In your wisdom, speak, tell me what I should do. का
सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के द्यूत या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, ये उस समय की ही बात नहीं है। आप चाहें तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। कभी रुके कभी चले राधा चोरी चोरी, पिया कहे आ जिया कहे नहीं गोरी। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। राधा शर्माए मनवा घबराए, पनिया भरने वो जाए ना जाए। नैया हो घड़ी सोचे ब्रिज वाला ब्रिज में है होरी, कान्हा रंग देंगे मोहे हाय बरजोरी। लोग करेंगे ये इशारे इशारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे।
शाम से न बांसुरी बजाए, चैन किसी का वो चित चोर ना चुराए। डगमग डोले जिया की नैया, डगमग डोले जिया की नैया, चले जब पुरवैया छेड़े बंसी कन्हैया। जादू भरे नैना डाले नैनवा की डोरी, सोए सारा जग जागे एक चकोरी, रात कटे गिन गिन के तारे तारे। आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे, शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। पनघट पे सखियाँ करती है बतियाँ, मोहन से लागी राधा की अखियाँ। जो भी मिले यही पूछे सुनो किशोरी, गई कहानी दिया रे बिंदिया तोरी, राम कसम छेड़ेंगे सारे सारे। आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे, कभी रुके कभी चले राधा चोरी चोरी, पिया कहे ना पिया कहे नहीं चोरी। आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे, 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 आजा राधे आजा तुझे। विनय मेरी सुन लीजिए, हे हरि जगदाधार, आराधन निषद करूं, कर लेना स्वीकार, कर लेना स्वीकार।
संसार ने जब ठुकराया, तब द्वार तेरे प्रभु आया। मैंने तुझे कभी ना ध्याया, तूने सदा सदा अपनाया। संसार ने जब ठुकराया। मैं मद माया में फूला, तेरे उपकारों को भूला, तेरे उपकारों को भूला। तूने कभी नहीं बिसराया, मैं ही जग में भरमाया। संसार ने जब ठुकराया। था मोह नींद में सोया, शुभ अवसर हाथ से खोया, शुभ अवसर हाथ से खोया। जब लूट रही थी माया, तूने कितनी बार जगाया। संसार ने जब ठुकराया। जग में सब कुछ था तेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा। अब अंत समय जब आया, मैं मन ही मन पछताया। हरि शरण तिहारी आया, सब चरणन माही चढ़ाया। संसार ने जब ठुकराया, तब द्वार तेरे प्रभु आया। संसार ने जब ठुकराया।
सुनो छे जी मारो देश पिया बिने सुनो छे जी मारो देश अवधि बरी थी अजहु अवधि बरी थी अजहु पंडर हो गया केस पंडर हो गया केस मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे मेरा के प्रभु कब रे मिलोगे तज दियो नगर नरेश तज दियो नगर